Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Some men are unlucky. Christopher Columbus cannot attach his name to his discovery. Guillotine cannot detach from his invention. Whoa. Right. The movement spreads from the center to the periphery. The work happens below the surface, but it happens nonetheless. Yeah. Those are the words of the great French romantic Victor Hugo, penned in 1834. Mm-hmm. And, they really encapsulate what might be the most profound, just devastatingly tragic irony in modern history. I mean, it really is. It's hard to overstate. It is. Just consider this for a second, right? You are a brilliant, highly educated 18th century physician. Mm-hmm. You are a humanist. Your entire life's mission, your driving philosophical force is the alleviation of human suffering. Right. A noble pursuit. Exactly. You advocate relentlessly for public health. Yeah. You fight for political equality. You campaign to make the world a tangibly gentler place for the poorest citizens. And yet, due to forces just entirely beyond your control, your name becomes globally, permanently synonymous with a mechanism of mass death. Your very identity is consumed by a machine engineered to sever human heads. It's just a staggering historical paradox that completely defies common sense. Yeah. And what makes it so intellectually gripping is that this physician, Dr. Joseph Ignace Guillotin, he didn't actually invent the machine that bears his name. Wait, really? Not at all. Not at all. He didn't draft the blueprints. He didn't design the heavy angled blade. He didn't build the physical prototype. It's wild. Right. Nor did he oversee its first gruesome trials in the courtyard of a Parisian prison. Yet history locked his identity to this device so inextricably that centuries later, the mere mention of his name evokes the terrifying hiss of a falling blade. It's chilling, honestly. It is, and it forces us to examine a profound, often overlooked mechanism of human society. Like, how do sweeping innovations become permanently linked to specific people, regardless of their actual material involvement in creating them? Well, that exact question is the focal point of the research we are unpacking today. We're looking at a truly breathtaking article published in the prestigious Academy of Management journal. Such a great piece of work. It really is. And for those keeping an eye on academic rigor, that is an FT50 listed journal representing the absolute pinnacle of management and organizational scholarship. Absolutely top tier. Yeah. The paper is titled The Social Attribution of Innovation, Uncovering the Heads Behind the Guillotine. And it was meticulously crafted by Paolo Aversa from King's College London, Paul Gouvard from ENC Business School, and Maria A. Makarova from Università Cattolica del Sacro Cuore. Yeah, their work is just a stunning piece of scholarship. It really bridges history, sociology, and modern innovation theory in a way you rarely see. Yeah, and the depth of their archival work is remarkable. But before we immerse ourselves in the theoretical architecture of 18th century France, we actually need to share a shift in our own operations with you, our listener. Yes, we do. Because, as you know, we examine large-scale systemic shifts here, and we have recently been forced to confront the systemic footprint of our own work. Right, it's something we had to face. Exactly. So starting from March 2026, we have transitioned our release schedule. We are now delivering our discussions to you every Sunday and Monday. Mm-hmm. On Sundays, we settle in with a classic foundational paper or a comprehensive book review. Then on Mondays, we shift our focus to the cutting edge, analyzing recent publications from top-tier peer-reviewed journals, much like the one we are exploring today. And we want to be entirely transparent about the reasoning behind this specific two-day schedule. Yeah, please explain the why here. Well, we rely heavily on AI-assisted technologies to synthesize vast amounts of literature and bring these complex narratives to life. But the hidden reality of these technologies is that they are exceptionally heavy on nature and the climate. They really are. Yeah, they require immense computational power, and that translates to considerable water intake by back-end data centers for cooling. So limiting our weekly release to just these 2 days is our deliberate way to give back to global climate change initiatives. We want to be mindful of our environmental footprint, ensuring that our pursuit of knowledge doesn't inadvertently harm the physical world we all share. Well, of course, not losing a single drop of the richness and depth you expect from these discussions. Exactly. We deeply appreciate your support as we navigate that balance. We really do. And speaking of the intersection of technology, society, and our physical environment, for our academic listeners who study these massive shifts in real time, we have a strong recommendation. Oh, yes, the upcoming conference. Right.
If you are planning to participate in person at the Academy of Management 86th Annual Meeting in Philadelphia, USA, please register for the Professional Development Workshop on the Space Economy. It sounds fascinating. It is an incredibly forward-thinking session, and it's spearheaded by Dr. Mehdi Montakhabi of Said Business School at Oxford University. And we have a personal connection there too, right? Yep, we do. We are incredibly proud to mention that our own producer, Mayukh Mukhopadhyay, is a contributor to this multidisciplinary, highly entrepreneurial workshop. That's awesome. Yeah. The commercialization of space is perhaps the ultimate frontier of innovation attribution, and the link to register is right in our show notes. Perfect. Furthermore, we want to bring your attention to a fantastic new educational resource. The Academy of Management SIM Division, that is Social Issues in Management, they quietly launched a new monthly initiative called AOM SIM-Bytes in June 2026. Oh, these are great. They really are. These are beautifully produced, real-styled short videos featuring insights from senior scholars and prominent faculty members in the management community. And they are specifically tailored to mentor early career scholars and PhD students. The very first YouTube short in this series features Professor Ed Freeman, who is, widely revered as the father of stakeholder capitalism. It is just a brilliant way to democratize access to elite academic mentorship. Completely agree. And this initiative is being spearheaded by the SIM Curriculum Development Committee. Once again, we have a wonderful local connection here. Our producer, Mayukh Mukhopadhyay, who serves on this committee, has been volunteering actively with the SIM committee leads for the past year. He's been busy. He has. He's been driving the content design and editing of the AOM SIM-Bytes initiative. Yeah, that's so great. Yeah, and the original brainchild for this whole project came from Professor Sheldine Sela at Trent University in Ontario. It is now being powerfully executed and driven forward by the committee chair, Professor Jennifer Griffin of Loyola University, Chicago. Fantastic work by all of them. The link to AOM SIM-Bytes is also in the show notes, so definitely check that out. Definitely. Finally, we strongly urge you to make the time to read the thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article we are discussing today. Yes, please do. We will guide you through the narrative and the theoretical framework, obviously, but the nuance and historical texture in the author's original text is deeply rewarding. The link is in the show notes. Now, to set our intellectual bearings, let us distill the core premise of this paper. At its heart, this research investigates how audiences, and by that we mean the general public, the press, political factions, how they actively construct the identity of an inventor. Right. The authors use the highly documented, just chilling story of the guillotine during the French Revolution to demonstrate that audiences assign credit or blame not to the person who drafted the technical blueprints, but to the person who most powerfully represents the social and political meaning of that new technology. And that distinction is absolutely crucial. It is about the co-construction of the creator and the creation in the public consciousness. Right. The authors argue that attribution isn't merely an administrative allocation of credit after an invention is completed. It's not just handing out a medal. Exactly. It is a deeply social, fluid process where a technological artifact is linked to a human being based on what that individual symbolizes in the cultural zeitgeist. But hold on, if we accept that premise, doesn't that fly in the face of how we usually think about credit? Well, we are taught that credit goes to the person who files the patent or the person who physically engineers the solution. Yeah. Think about how we view modern consumer technology. Okay. When we talk about the smartphone, the cultural narrative attributes it almost entirely to Steve Jobs. Right, the lone genius. Exactly. We completely erased the thousands of software engineers, hardware designers, material scientists, and supply chain experts who actually did the material work of building the iPhone. We attribute it to Jobs because he symbolized the visionary rupture that the device represented. Are the authors suggesting that this modern phenomenon is actually a universal historical mechanism? They are suggesting exactly that, yes. And they use this historical case to really decode the mechanics of it. Okay, so where do we start? Well, to fully appreciate their contribution, we have to look at the academic backdrop. For decades, management scholarship has treated the creation of technology and the recognition of the creator as two entirely separate fields of study. Really, separated entirely. Yeah. On one side, you have the literature on the production of innovation. This field acknowledges that creating something new is inherently collective, messy, and networked.
Right. It involves institutions, cumulative scientific knowledge, and countless hidden workers. That makes perfect sense. No one invents anything in a vacuum. It's the reality of the thousands of engineers behind the iPhone we just talked about. Precisely. But then, on a completely separate track, you have the research focusing on the recognition of innovators. Okay. This stream examines how societal credit tends to aggressively converge on a single individual. It often dissects that lone inventor myth. I see. Human societies seem neurologically wired to crave a hero narrative. We desperately want Thomas Edison to be the sole genius behind the light bulb, or Cyrus McCormick to single-handedly invent the mechanical reaper. Right. It's a better story. Exactly. So this literature argues that credit allocation is largely driven by social status, legal systems like patents, and strategic PR narratives. Okay, I see the disconnect. The first track says innovation is a massive team effort, and the second track says society just picks a charismatic leader to give the trophy to. You got it. But neither track explains how the audience actually selects that specific person out of the crowd to be the namesake. What about the Scott framework? The social construction of technology has been around for decades. Doesn't that theory already explain how society shapes our understanding of new inventions? It is a fair question, and the authors actually engaged deeply with the Scott framework. Scott emerged in the 1980s as a powerful rebuttal to technological determinism. Which is the idea that technology just evolves on its own. Right, that it has its own logical, inevitable path. Scott argues that technologies are socially malleable. Okay. When a new artifact is introduced, different audiences look at it and fiercely debate its meaning until it reaches a state of interpretive closure. Interpretive closure, what does that mean in practice? That is the moment society finally agrees on what the thing actually is. For instance, when the bicycle was first invented, some audiences saw it as a dangerous, high-speed athletic machine for reckless young men. Interesting. Yeah, but others saw it as a practical, democratizing mode of transport. The physical artifact didn't change, but its social meaning was debated until it stabilized as a commuter tool. So Scott focuses entirely on the meaning of the object itself. But I sense a blind spot there. A massive blind spot. Scott focuses relentlessly on the artifact itself, but it almost entirely ignores how the identity of the innovator is constructed right alongside it. Oh, wow. Yeah. The authors of this paper are bridging these isolated streams. They are arguing that you cannot understand how a controversial technology gets defined by society without simultaneously understanding how its inventor gets defined by that same society. The artifact and the human avatar are co-constructed. Exactly. They make each other. You know, I see this dynamic play out in modern corporate environments all the time. Oh, absolutely. Think about a massive multi-department corporate initiative, like a new software platform or a sweeping organizational restructuring. Teams work on it for years. Years and years. But when it finally launches, who gets the credit? It rarely goes to the lead developer. It gets attributed to the charismatic executive who stood on the stage, whose personal brand aligned most perfectly with the strategic narrative of the launch. Yep. The team did the material labor, but the executive becomes the permanent namesake of the initiative. That corporate dynamic is a perfect microversion of what happened in 18th century France. And to prove how this mechanism works on a societal scale, the authors deploy a specific methodology known as a micro-historical study. Microhistorical study. So what exactly does that entail? Well, for those unfamiliar with this approach, microhistory is not about indulging in obscure trivia. It involves taking a highly specific, rare, and deeply complex historical event, in this case, the invention and adoption of the guillotine between 1788 and 1792, and placing it under an intense analytical microscope. Okay, to what end? The goal is to uncover broad, macro-level socio-historical patterns that are usually invisible in larger sweeping histories. You basically dissect the micro to explain the macro. It is like isolating a single drop of pond water on a slide to map out the biological rules of the entire ecosystem. That is a brilliant analogy, yes. But, executing a microhistory requires an unbelievable volume of primary data. You can't just read a few history books. You have to go back to the raw source material. You really do. And the archival work the authors performed here is staggering. They retrieved original transcripts from the French National Assembly, the Revolutionary Parliament. They analyzed 11,177 historical press articles from the Retro News database, meticulously tracing exactly when, how, and by whom different words were used. The linguistic tracing is incredible. They dug into 18th century letters, personal memoirs, judicial records.
Just a mountain of data. And that granular level of data is absolutely essential because it allows them to trace the exact day-by-day timeline of public sentiment. They can pinpoint the precise moment a concept is introduced into the public discourse, how competing factions debate it, and the exact week a specific individual's name gets irreversibly attached to the device. Okay, so we have this amazing methodology, but we have to ask, why the guillotine? Out of all the inventions in human history, why is this specific artifact the perfect case study for a paper on the social attribution of innovation? Well, how would you look at it from a historical perspective? I would argue it is because the guillotine represents an absolute, undeniable physical rupture from the past. Exactly. It wasn't just an iterative improvement on a tool. It was a physical manifestation of the end of the Ancien regime, the old, entrenched feudal order of France. Because it represented such a monumental societal earthquake, it catalyzed a highly polarized audience. You had the revolutionaries who were aggressively advocating for systemic equality, natural rights, and a complete break from historical tradition. Right. On the other side, you had the royalists, who were prioritizing social order, the preservation of traditional hierarchy, and the divine authority of the monarchy. And it is vital, as we navigate this history, that we view these two factions with strict impartiality, just as the researchers do. Of course. Both the royalists and the revolutionaries operated from deeply entrenched, philosophically complex worldviews. The royalist perspective maintained that a strict social hierarchy, visibly enforced by unequal and severe punishments, was a necessary bulwark against societal collapse and chaos. Right, they feared anarchy. Exactly. While the revolutionary perspective maintained that equality before the law was an undeniable natural right, regardless of the temporary political instability required to achieve it. Okay. The invention of the guillotine did not just happen in the background of this ideological war. It became the very focal point of it. To truly grasp the stakes of this debate, I think we have to immerse ourselves in the reality of the 18th century justice system in France. We do. It's grim, but necessary. Because it wasn't just flawed or biased. By modern humanitarian standards, it was an architecture of nightmare. Yeah. The authors highlight a specific, highly publicized execution that sparked immense public outrage and really catalyzed the intellectual debate on penal reform. This was the execution of Robert François Damiens on March 28, 1757. The Damiens case is just a crucial turning point in European penal history. What exactly happened? Well, Damiens had attempted to assassinate King Louis XV with a penknife. His punishment was explicitly designed by the crown to be the ultimate, overwhelming public spectacle of state retribution. Just a total display of dominance. Exactly. Before thousands of spectators in a central Parisian square, he was subjected to hours of elaborate choreographed torture. He was burned with sulfur, his flesh was torn with hot pincers, molten lead and boiling oil were poured into his wounds. Oh my God. It gets worse. Finally, he was drawn and quartered by 4 horses, though the executioners ultimately had to use knives to sever his limbs because the horses could not complete the task. That is horrific. His remains were burned to ashes. His family was exiled, and his ancestral home was razed to the ground. It was a terrifying display of absolute, unchallengeable sovereign power. It is genuinely difficult to even process that level of state-sanctioned brutality. Yes. But this occurred precisely as the Enlightenment was taking a firm hold over the intellectual salons of Europe. Thinkers were beginning to fiercely question this barbarity. Yes. The execution of Damiens deeply traumatized the public conscience. It initiated what the authors identify as a collective societal introspection, which eventually structured the massive debate around penal law into 3 distinct, highly value-laden problem dimensions. Right. The academic and public discourse crystallized around 3 core dimensions. The first was the fundamental need for capital punishment itself. Okay. Should the state, under any circumstances, possess the moral right to take a citizen's life? Intellectuals like the Italian criminologist Cesare Beccaria published groundbreaking treatises, most notably his 1764 work on crimes and punishments, arguing for total abolition. Abolition entirely. Yes. Beccaria claimed the death penalty was mathematically wasteful, morally hypocritical, and unnecessary for societal defense. On the opposing side, conservative jurists argued it was the only reliable deterrent against the most heinous crimes. Okay, that brings us to the second dimension. Yeah. The cruelty of the punishment. Right. Let's say the state must execute someone. How much physical agony is acceptable?
Enlightenment heavyweights like Voltaire pushed aggressively for humanity in the justice system. They looked at apparatuses like the breaking wheel, where a victim's bones were systematically shattered with an iron bar while they were tied to a wagon wheel, and saw a system that degraded the humanity of everyone involved, including the spectators. Yeah, the crowd itself is brutalized by watching it. Exactly. Conservatives, however, defended a degree of cruelty as a necessary component of proportionate justice. They argued that a king's assassin must suffer visibly more than a petty thief, and that sanitizing the horror of execution would entirely destroy its psychological deterrent effect on the populace. And then we reach the third dimension, which is perhaps the most crucial for understanding the social dynamics of our story: the inequality of punishment. This one is fascinating. It really is. Under the Ancien regime, the method of your execution, the sheer amount of agony you were forced to endure, was legally dictated by your social class. Unbelievable. Aristocrats, if condemned to death, were granted the privilege of a relatively swift beheading by a sword or an axe. It was considered an honorable, dignified exit. Right. Commoners, on the other hand, were subjected to the rope, the breaking wheel, or burning at the stake. Stop and really imagine that for a second. Imagine living under a legal system where the literal method of your physical destruction, whether you die in a fraction of a second or suffer in agony for hours, is determined entirely by your inherited title and your tax bracket. It's just wild to think about. It wasn't just a cruel penal system. It was a physical, visceral enforcement of the social hierarchy. It was the state reminding the public, in the most violent way possible, that men were absolutely not created equal. Precisely. And this was the intellectual powder keg of a debate going on in the late 1780s, right as the revolution was beginning to boil over. And tensions are unimaginably high. The public sphere was exploding with aggressive pamphlets, furious press articles, and soaring parliamentary arguments about these three dimensions: capital punishment, cruelty, and inequality. Right. It is precisely into this highly charged, highly polarized, volatile atmosphere that Dr. Joseph Ignace Guillotine enters the narrative. Okay, let's examine Dr. Guillotine the man. Who was he, really? He's quite a character. He wasn't some fringe radical shouting from the gutters. He was a man of incredibly high social and professional status. Yes, very elite. A highly respected physician, a full professor of anatomy and pathology at the Paris Faculty of Medicine. His intellectual credibility was so immense that years prior, King Louis XVI had personally appointed him to a royal commission to investigate the controversial medical practices of Anton Mesmer. Alongside Benjamin Franklin. Yes, exactly. Alongside scientific titans like Benjamin Franklin and Antoine Lavoisier. So he was the quintessential Enlightenment, intellectual, rational, empirical, and deeply concerned with human welfare. Right. But he was also fiercely political. In 1788, he published a widely read pamphlet titled The Petition of the Citizens of Paris, demanding equal political representation for the Third Estate, which comprised the common people. Okay, so he's stepping into the political ring. Oh, fully. And this publication made him an incredibly polarizing figure. He was adored by the Parisian masses, hailed as a courageous champion of the people, but he was utterly despised by the conservative aristocracy and the royalist press. They must have hated him. They viewed him as a dangerous agitator, threatening the natural divine order of society. So wielding this massive public popularity, he gets elected as a deputy to the newly formed National Assembly. And on October 9, 1789, he steps up to the podium to propose a comprehensive 6-article bill to radically reform the penal code. Now, what's fascinating is that Guillotine privately was opposed to the death penalty altogether. Really? He was an abolitionist. He was. But he was a pragmatist. He likely knew that a proposal for total abolition would never survive a vote in the Assembly. So he strategically focused his legislative proposal on the second and third dimensions: cruelty and inequality. Smart move. Yeah. He proposed that if the state must kill, the punishment should be identical for everyone, regardless of rank or wealth. And to achieve this, he advocated for a new method to ensure a swift, reliable, painless death for all. He argued eloquently that the culprit should be beheaded by means of a simple mechanism. A simple mechanism. Yeah, and now this is where the history gets incredible. He didn't have blueprints. He didn't have a wooden prototype hidden under a sheet. He didn't have an engineering background. Nothing at all. Nothing. He just had this abstract conceptual vision of a machine that would standardize and democratize death.
2 months later, he addressed the assembly again to defend his proposal, and there is this famous, slightly morbid quote recorded in the transcripts where he describes the theoretical device. Oh, I've got to hear this. He said, with great rhetorical flair, "With my machine, I strike off your head in the twinkling of an eye, and you feel nothing. The mechanism falls like thunder, the head flies off, blood spurts, the man is no more." Wow. The historical archives actually note that this graphic description drew nervous laughter from the assembled deputies. I mean, it's such a surreal, almost cinematic moment. A respected doctor standing in Parliament, vividly miming a decapitation machine. It's wild. But the authors of the paper point out something theoretically vital happening in that room. This is what they call the mapping process. Exactly. Dr. Guillotine brilliantly mapped his abstract concept of a simple mechanism directly onto the core problem dimensions that the French public cared about most deeply. Hit the pain points. Yeah. He mapped it onto the value of humanity, promising it would be painless and instantaneous. And he mapped it onto the value of equality, promising it would apply the exact same treatment to a wealthy royal duke as it would to a starving baker. And by mapping the technological innovation onto these high-minded Enlightenment moral values, he gave both his ardent supporters and his bitter detractors a clear framework to interpret the machine. Okay, so how did they react? Well, the revolutionary factions praised him to the heavens. Le Moniteur, a major progressive newspaper, lauded the proposed innovation, declaring that it would finally replace the flawed human executioner with a perfect blind machine that, much like the ideal of law itself, cleanly separates the sentence from the judge. So they saw it as a tool of justice. They saw it not as a weapon, but as the dawn of a new egalitarian age. But the royalist backlash was ferocious. And this is where the story takes a fascinating linguistic turn that seals his fate. A prominent, highly read royalist satirical outlet called Les Actes des Apôtres viciously mocked him. They hated his Enlightenment ideals, they hated his support for the Third Estate, and they saw his proposal as grotesque. Right. So they published a satirical song. They mockingly praised him as a genius mechanic, contrasting his noble medical profession with the dirty work of a butcher. And in this song, they officially coined the term guillotine. Let me read a translative fragment of that poem from November 1789, because it is the exact moment the attribution is forged in text. Please do. It reads, "The patriot keen, guillotine, the best advice to have before the next debate." Offhand, his genius planned that machine that simply kills, that's all, which after him we call guillotine. It is incredible. The underlying psychology here is just fascinating. The very people who hated Dr. Guillotine the most, the royalists who wanted to politically destroy him, inadvertently cemented his name to the machine for all of eternity. They really did. They didn't do it to honor him. They attached his name to it because they wanted to turn him into a walking caricature of Enlightenment excess. They wanted to highlight the perceived absurdity of a life-saving doctor inventing a death machine. Exactly. They weaponized the attribution process. The royalist press didn't care about the engineering mechanics of the machine. They cared deeply about what the machine represented politically. Right. And Dr. Guillotine was the absolute perfect human avatar for that progressive politics. But here is the part of the story that breaks my brain. Okay. After this massive media splash in late 1789, the project entirely stalls. The assembly gets bogged down, debating 1,000 other revolutionary crises. Dr. Guillotine steps away from the Penal Reform Committee. A year and a half goes by with no blueprints, no machine, no progress whatsoever. If Guillotine completely disappeared from the physical development of the project, why didn't someone else get the credit when it finally got built? That's a great question. This is where the authors use a brilliant technique. They explore historical counterfactuals, the what-ifs of history, to prove their theory of how attribution really works, by showing why the other men involved failed to capture the public imagination. And the counterfactuals are arguably the strongest part of the paper's methodology. Let's examine the other major players who actually did the work. Go first. First, we have Charles-Henri Sanson. He was the royal executioner of Paris, a man with generations of family experience in the grim business of state killing. Right? By March 1792, the revolutionary tribunals are condemning people at a rapid pace, the prison populations are swelling, and the Minister of Justice is getting desperate. They turn to Sanson for advice on how to handle the volume. Sanson writes a highly detailed, incredibly practical, and frankly horrifying memorandum. And his memo
is a masterpiece of grim practicality. He points out that beheading multiple people with a sword is a physical impossibility. Yeah. He writes that swords get dull after a single strike. A high-quality executioner's sword costs 600 livres, which is a massive sum, and they break easily if they hit bone awkwardly. Furthermore, he explains that if you have to execute several people in a row, the executioner gets physically exhausted and psychologically traumatized. He warns the government that if a condemned subject struggles even slightly, the execution becomes, and this is a direct quote from his memo, a struggle and a slaughter. Wow. Sanson is practically begging the state for a mechanical device to standardize the process and prevent a literal public bloodbath. From an innovation standpoint, Sanson is the quintessential lead user. He deeply understands the operational problem and provides the crucial use case argument that forces the government's hand to finally adopt the machine. Right. So the obvious question is, why wasn't the machine named the Sansonet? Good question. Why wasn't it? The authors explain this failure through a social mechanism called status filtering. Sanson was a social outcast. Executioners in 18th century France were heavily stigmatized. They were social pariahs living on the edge of the city. Wow, really? Oh, the stigma was so intense, they were subject to something called droit de havage. It was this bizarre law, meaning they had to use a special marked tin spoon to take their tax of goods from market vendors because the bakers and butchers categorically refused to physically touch them or accept coins from their hands. Wow. So because of his abysmally low social status, the politicians and the press literally filtered out his contribution. They couldn't conceptualize him as an inventor. Precisely. You cannot attribute a societal leap forward to an untouchable. Furthermore, consider how Sanson framed his argument. Okay. His memo was based entirely on operational efficiency, the financial cost of broken swords, and the grim physical mechanics of his trade. He didn't frame his argument around high-minded Enlightenment values like universal equality and constitutional humanity. I see. The educated philosophical deputies in the assembly didn't want to hear about the cost of dull swords and shattered collarbones. They wanted to hear about philosophical progress. Sanson's contribution was practically vital, but socially, it completely failed to trigger the necessary attribution spiral. Okay, that perfectly explains why Sanson was ignored. But what about the men who actually designed the physics of the blade and built a physical object? Enter Dr. Antoine Louis and Tobias Schmidt. By March 1792, acting on Sanson's dire warnings, the assembly turns to Dr. Antoine Louis. Now, Dr. Louis is the secretary of the prestigious Academy of Surgery. He has the status. He absolutely does. Unlike Sanson, he possesses the high scientific and social status necessary to be taken seriously by the elite. He is tasked with solving the physical problem. He writes a detailed anatomical report outlining the exact requirements for a clean, swift decapitation. Okay. He essentially designs the physical machine, most notably introducing the heavy, diagonally angled blade that slices rather than chops. He based his mechanical ideas on an older, cruder English device called the Halifax gibbet. So Dr. Lou is the actual legitimate lead engineer of the project and who actually built it. This part is amazing. The government gets quotes, but the King's Carpenters submits a bid that is deemed astronomically too high. So they hire a German immigrant named Tobias Schmidt. And what was Schmidt's primary occupation? He was a piano and harpsichord maker. A piano maker. They hired a musical instrument craftsman because his quote was cheaper. Schmidt physically builds the machine, combining wood, heavy brass, and steel. Okay. He even has the audacity to apply for a formal patent for the death machine. But Schmidt's patent application is swiftly rejected by the revolutionary government. They rejected it on moral grounds, arguing that one cannot hold a commercial monopoly on an instrument of public justice and death. Wow. And much like Sanson, Schmidt suffers from status filtering. He is viewed by the press and the politicians merely as a cracksman, a hired artisan, a mechanic working for a wage. He entirely lacks the intellectual and social prestige required to be recognized as the father of a paradigm-shifting societal innovation. I am still hung up on the piano maker building the guillotine. The historical absurdity of that is almost too much to bear. It is pretty rich. But setting Schmidt aside, what about Dr. Louis? For a short window in the spring of 1792, the machine was actually referred to in the press as the Louison, or the Louisette. He had the status, he did the design. Why didn't his name stick permanently? Well, the Louisette was indeed a strong contender for the name, but it failed to crystallize for two primary reasons. What were they? First, Dr. Louis was deeply uncomfortable with the reality of what he had built. As soon as the first blood was spilled, he actively tried to distance himself from it.
He wrote letters to friends, lying and minimizing his involvement, claiming he merely consulted on the anatomy. He saw the writing on the wall. He did. But more importantly, Dr. Louis died suddenly in May 1792, literally just a few weeks after the machine's first public use. Oh, wow. Yeah. His sudden death entirely halted his ongoing association with the device in the vibrant public sphere. There was no living avatar left to defend his legacy or for his enemies to attack in real time, right as the machine's usage began to rapidly accelerate. Which brings me to the ultimate brain-bending pushback of this entire historical narrative. Lay it on me. If Tobias Schmidt physically sawed the wood and built it, if Dr. Antoine Louis meticulously engineered the physics of the angled blade, and if Charles-Henri Sanson championed its practical adoption, how in the world did Dr. Joseph Ignace Guillotine, a man who hadn't spoken a single word about it in the assembly for 2 whole years, endure as the permanent namesake? It's the multi-million-dollar question. How does the man who did none of the labor beat out all the men who actually brought it into reality? This is the theoretical masterpiece of the paper. To explain this, the authors introduce what they call the evaluation attribution spiral, culminating in the concept of crystallization. The evaluation attribution spiral. Yes, they break this down into a brilliant cyclical process model that reveals exactly the mechanics of how audiences co-construct the innovator and the innovation. Let's trace this cycle carefully because it holds the key to understanding how we attribute credit even today. I want to trace this step by step. The authors observe that it begins with a sequence of perception and filtering. Yes. First, the audience has to perceive an actor engaging with a potential solution. Dr. Guillotine stands up in 1789 and proposes the simple mechanism. Right. But perception isn't enough. The audience instantly filters that perception based on social status. Guillotine is a prominent medical professor and a famous political deputy. His elite status ensures the public actually pays attention, completely bypassing the filter that erased Sanson and Schmidt. Which leads directly into the mapping phase. Exactly. The audiences look at his proposal and they map it onto the highly charged, emotional problem dimensions of the era. Yeah. Cruelty and inequality. Guillotine isn't just offering a functional tool, he's offering a physical, undeniable manifestation of Enlightenment ideals. He offers painless equality. He passes those initial hurdles flawlessly. His proposal is seen, it is deemed culturally worthy of debate because of his elite status, and it perfectly aligns with the ideological battles raging in the press. Right. And this mapping initiates what the authors call the spiral. The spiral is a recursive, self-reinforcing psychological loop between the audience, the artifact, and the innovator. Walk me through how that loop actually spins in the minds of the public. The audience evaluates the machine through the lens of Guillotine's well-known political engagement. They look at this terrifying device and say, because Dr. Guillotine proposed it, this must be an instrument of revolutionary justice and profound equality. Okay, that makes sense. Then, to make sense of this massive, shocking societal change, the industrialization of death, they need a human face to represent the rupture from the past. So, they attribute the machine firmly back to Guillotine. This is where the royalist satirists, naming it the guillotine, acts as the accelerant. And as the loop closes, they evaluate Guillotine based entirely on the machine. His complex human identity becomes flattened and inextricably tied to the falling blade. Exactly. The progressive revolutionaries praise him as a visionary hero of humanity. The conservative royalists deride him as a monstrous mechanical butcher. But here is the critical insight. Both sides are feeding the exact same spiral. They are. The more they passionately debate the morality of the machine, the more they invoke his name. The more they invoke his name, the more the machine is defined by his specific political identity. It just loops and loops, gathering immense cultural momentum, feeding on the polarization of the press. Until it reaches a state of crystallization. The linguistic and conceptual link between Dr. Guillotine and the machine becomes permanently, irreversibly frozen in the public consciousness. It's locked in. Completely. The term guillotine totally and permanently eclipses the competing terms like louison or louisette. The attribution ceases to be a debate and becomes a taken-for-granted historical fact. Yeah. Once an attribution crystallizes in this manner, it is incredibly difficult to undo, even if mountains of new historical evidence come to light proving the namesake didn't actually build it. And this crystallization sets the trap for the final, most devastating phase of the model, the transfer of shifting meanings. This is the tragic twist of the whole story. The machine was initially designed, mapped, and evaluated as a symbol of humane, enlightened equality.
It was supposed to be a tool of mercy. But then, the political context shifts violently. The Reign of Terror begins in 1793. The historical context warps the artifact entirely. The state, falling under the control of radical factions led by Maximilien Robespierre, begins using the machine not just for common criminals, but to aggressively purge perceived political enemies. The purges were horrific. The guillotine becomes Europe's first technology of state-administered, industrialized mass execution. The numbers are staggering. In Paris alone, over a period of just 47 days during the height of the terror in the summer of 1794, 1,376 people were decapitated. It's hard to even fathom. The streets literally ran with blood. The machine's mechanical efficiency, which was originally supposed to be its greatest humanitarian feature, is exactly what turns it into a relentless factory of death. The meaning of the machine completely flips. It goes from humane, enlightened equality to relentless state-sponsored terror and tyranny. And because the attribution to Dr. Guillotine had already crystallized years prior, this new horrific meaning transferred directly, inevitably, back to him. That is the ultimate tragic irony of his life. The humanist doctor, whose original genuine goal was to reduce human physical suffering, is historically transformed into Dr. Death. What a legacy. His public image was entirely blackened by the blood of the terror. Historical accounts show that long after the revolution ended, people visibly shuddered when they were introduced to him in public, assuming he was a sociopathic monster who delighted in inventing a slaughterhouse machine. That is just heartbreaking. The attribution was so incredibly strong that his actual documented humanist intentions and his actual total lack of involvement in the engineering of the blade no longer mattered in the slightest. The evolving meaning of the innovation entirely reshaped the identity of the innovator. It is a profound and frankly somewhat terrifying realization about how public memory and historical truth actually operate. And this brings us to the vital takeaways from this incredible paper. Yes, let's look at the broader impact. For the academics and sociologists listening to our discussion, the theoretical contribution here is massive. The authors rigorously prove that attribution isn't just the final administrative step of handing out a gold medal after an R&D process is finished. Right, it's not just the end of the line. It is a fundamental, deeply co-constructed social process. Audiences actively use a person's existing identity, their social status, and their moral framing to make sense of a confusing, frightening new innovation. The innovator shapes the perception of the innovation, but the shifting reality of the innovation absolutely shapes the historical identity of the innovator in return. And for the practitioners tuning in, the corporate managers, the startup entrepreneurs, the policymakers driving change, this framework is deeply, immediately applicable to modern business. How so? Well, if you are launching a highly controversial new project, a disruptive platform technology, or initiating a massive corporate reorganization, you have to understand the spiral. Right. Your personal status and the specific moral or strategic dimensions you actively attach to that launch will dictate the narrative of who gets the credit or the blame. Are you telling me that modern executives are running the exact same risks as Dr. Guillotine? In a reputational sense, yes. If you map your new project to the core values of your company and it wildly succeeds, you become the visionary hero. The attribution crystallizes around you. Okay, but what if it fails? If the meaning of that project shifts down the line, say the social media technology you proudly launched is later manipulated in a way that severely harms data privacy, or the sweeping reorganization leads to massive, painful layoffs and culture collapse, that crystallized attribution will transfer all of that new negative meaning directly back onto you. You become the scapegoat. You will become the permanent scapegoat, regardless of who actually coded the invasive software or who ultimately signed the termination papers. You chose to be the avatar for the change, and you cannot detach your name from the fallout. It forces us to ask some deeply curious questions about the future of innovation, especially as we enter eras where creation is increasingly decentralized. Oh, absolutely. For instance, how does this attribution spiral apply to massive innovations where the creator is completely ambiguous or intentionally pseudonymous? Take Bitcoin and the mysterious figure of Satoshi Nakamoto. That's a great example. Human audiences desperately want to attribute the trillion-dollar cryptocurrency ecosystem to a single recognizable genius. Over the past decade, we have watched the public frantically project different values: libertarianism, decentralization, anti-establishment rebellion onto this ghost figure to make sense of the massive financial rupture Bitcoin caused. That is a brilliant parallel. The public needs a face to anchor the spiral.
which leads us to an even more pressing, urgent question for our modern era. What happens to the social attribution of innovation in the age of artificial intelligence? We are currently seeing generative AI models writing complex code, creating award-winning art, and solving protein-folding biological problems that baffled human scientists for decades. It's happening so fast. It is. The innovator, in the strict literal sense, is a massive machine learning algorithm running on the data centers we discussed earlier. But human audiences, driven by the exact same deep-seated psychological processes we just explored in 18th century France, desperately crave a human face to praise or blame for the AI's output. That is the frontier we are standing on right now. When an AI cures a disease, will we attribute the success to the CEO of the tech company? Right. Conversely, when the AI hallucinates something dangerous, or generates defamatory content, or makes a biased lending decision, will we blame the individual prompting engineer? Will we blame the CEO? Who takes the fall? Exactly. Our legal frameworks and our social norms are going to struggle immensely with this transition because our psychological instinct is entirely geared to run that evaluation attribution spiral around a human being with moral agency, not a server farm running matrix multiplications. It is a complex, fascinating frontier, and it proves exactly how vital, deep, rigorous historical research like this is for understanding the mechanics of our present and predicting the challenges of our future. It really does. We are so incredibly grateful you took the time to join us for this journey into the research today. Please remember to check the show notes. You will find the direct link to this brilliant paper in the Academy of Management Journal, the registration link for Dr. Mehdi Montakabi's Space Economy PDW at the AOM annual meeting, and the link to the fantastic AOM SIM-Bytes initiative featuring Professor Ed Freeman. We will leave you with this single lingering thought to mull over as you navigate your week. We began with Victor Hugo's poignant observation that Guillotine could not detach his name from his invention, that the work happens below the surface, but the name is caught in the current. As we move rapidly into a world where algorithms, decentralized networks, and autonomous systems begin to generate the next massive wave of world-altering innovations, who will society desperately choose to stand on the scaffold and take the name? When the next great rupture occurs, who will be our next unlucky pioneer? Take care of yourselves, and we will talk to you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 1757 সালের 28শে মার্চ, মানে একটু কল্পনা করুন দৃশ্যটা। প্যারিসের প্লেস ডি গ্রেভ, বিশাল একটা চত্বরে হাজার হাজার মানুষের এক উন্মত্ত ভিড়। আর সবার চোখ কিন্তু ওই চত্বরের মাঝখানে বেঁধে রাখা একটা মানুষের দিকে। একদম। লোকটার নাম রবার্ট ফ্রান্সোয়া ড্যামিয়েন্স। অপরাধ, রাজা পঞ্চদশ লুইকে হত্যার চেষ্টা। আর তার শাস্তির ধরনটা শুনলে আজও শিউরে উঠতে হয়। সত্যি, 4টে শক্তিশালী ঘোড়া দিয়ে তার হাত পা বেঁধে বিপরীত দিকে ছোটানো হয়েছিল, মানে শরীরটাকে আক্ষরিক অর্থেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার জন্য। ঠিক। আর তারপর ওই ক্ষতস্থানে ফুটন্ত সীসা আর তেল ঢালা হয়, সবশেষে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো তাকে। এই বিভৎস, মানে এই যে প্রকাশ্যে ঘটানো একটা অমানবিক দৃশ্য, এটা পুরো ইউরোপের বিবেককে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, মানুষ তখন ভাবতে বাধ্য হয়েছিল যে ন্যায় বিচারের নামে রাষ্ট্র আসলে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, তাই না? আর ঠিক এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা থেকেই শুরু হয়েছিল এক নতুন খোঁজ, এমন এক মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থার খোঁজ যা হবে যন্ত্রণাহীন, দ্রুত আর সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য সমান। ফরাসি সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো 1834 সালে একটা চমৎকার কথা লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার আবিষ্কারের সাথে নিজের নাম জুড়তে পারেননি, কিন্তু গিলোটিন তার আবিষ্কার থেকে নিজের নাম কিছুতেই মুছতে পারেননি। হ্যাঁ, আর এখানেই লুকিয়ে আছে ইতিহাসের অন্যতম বড় এক প্রহেলিকা। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল, গিলোটিন নামক এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রটি ডক্টর গিলোটিন কখনোই আবিষ্কার করেননি। আরে হ্যাঁ, তিনি এর কোনো নকশাও আঁকেননি, কোনো কাঠও কাটেননি।
অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরো পৃথিবী তাকেই এই শিরোচ্ছেদকারী যন্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবে জেনে এসেছে। আজকের এই আয়োজনে আমরা এই ঐতিহাসিক ধাঁধার উত্তরই খুঁজব। আমাদের আলোচনার ভিত্তি হল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল, মানে একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত একটি অসাধারণ গবেষণাপত্র। নিবন্ধটির নাম দি সোশ্যাল অ্যাট্রিবিউশন অফ ইনোভেশন, আনকভারিং দি হেডস বিহাইন্ড দি গুইলোটিন। এই যুগান্তকারী গবেষণার পেছনে রয়েছেন কিংস কলেজ লন্ডনের পাওলো অ্যাভারসা, এসেক বিজনেস স্কুলের পল গোভার্ড এবং ইউনিভার্সিটা ক্যাটোলিকা দেল স্যাক্রো কুয়োরের মারিয়া মাকারোভা। তো এই গবেষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করার আগে আমাদের এই একাডেমিক সম্প্রদায়ের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, আমাদের শ্রোতাদের নিরন্তর সমর্থনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনাদের ভালোবাসাতেই 2026 সালের এই মার্চ মাস থেকে আমরা সাপ্তাহিক সূচিতে প্রবেশ করেছি। এখন থেকে প্রতি রবিবার এবং সোমবার আমাদের নতুন আয়োজন প্রকাশিত হচ্ছে। রবিবারের আয়োজনে আমরা ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা সারা জাগানো বইয়ের পর্যালোচনা করি, আর সোমবারের আয়োজনে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একদম নতুন প্রকাশনার ওপর আলোকপাত করা হয়। আর এখানে একটা বিষয় একটু খোলাসা করা দরকার। আপনারা জানেন বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI ভিত্তিক প্রযুক্তিগুলোর ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। একদম, যা আমাদের প্রকৃতি আর জলবায়ুর উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তো পরিবেশ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি নীরব কিন্তু দৃঢ় উদ্যোগ হিসেবেই আমরা আমাদের আয়োজনের সংখ্যা সপ্তাহে কেবল 2টিতে সীমিত রেখেছি। হ্যাঁ, এটা প্রকৃতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা। তবে আমরা নিশ্চিত করেছি আলোচনার গভীরতা আর সমৃদ্ধিতে যেন বিন্দুমাত্র আপোষ করা না হয়। এর পাশাপাশি স্কলার এবং গবেষকদের জন্য আরও 2টো দারুণ খবর আছে। যারা আগামীতে ফিলাডেলফিয়ায় একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর 86তম বার্ষিক সভায় সশরীরে অংশগ্রহণ করার কথা ভাবছেন, তারা কিন্তু একটা বিশেষ ওয়ার্কশপে নিবন্ধন করতে পারেন। ঠিক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইদ বিজনেস স্কুলের ডক্টর মেহেদি মোন্তাখাবিদির নেতৃত্বে স্পেস ইকোনমি বা মহাকাশ অর্থনীতি বিষয়ক একটি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ। আর মজার ব্যাপার হলো, আমাদের এই আয়োজনের প্রযোজক ময়ূখ মুখোপাধ্যায় স্পেস ইকোনমির উপরই বহুমুখী কর্মশালার একজন অবদানকারী। বিস্তারিত লিঙ্ক আমাদের শো নোটসে দেওয়া আছে। আরও একটা চমৎকার উদ্যোগের কথা জানিয়ে রাখি, বিশেষ করে তরুণ গবেষকদের জন্য এটা খুব কাজে আসবে। একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্টের সিম ডিভিশন নিঃশব্দে AOM SIM-Bytes নামে একটা নতুন মাসিক উদ্যোগ শুরু করেছে। হ্যাঁ, 2026 সালের জুন থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগে ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রের প্রবীণ স্কলাররা নতুন গবেষকদের জন্য রিল স্টাইলের ছোট ছোট শিক্ষণীয় ভিডিও তৈরি করছেন। আর শুনলে অবাক হবেন, প্রথম ইউটিউব শর্টটি তৈরি করেছেন স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক প্রফেসর ফ্রিম্যান স্বয়ং। ভাবা যায়, ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শেলডন সিমোলার মস্তিষ্কপ্রসূত এই অসাধারণ উদ্যোগটি সিম কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আর বর্তমানে এই কমিটির চেয়ার হিসেবে লয়োলা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর জেনিফার গ্রিফিন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজগুলো এগিয়ে নিচ্ছেন। আনন্দের বিষয় হলো, আমাদের প্রযোজক ময়ূখ গত 1 বছর ধরে এই কমিটির সাথে কন্টেন্ট ডিজাইন ও সম্পাদনার কাজে সক্রিয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্ত আছেন। AOM SIM-Bytes-এর লিঙ্কও শো নোটসে দেওয়া আছে, একটু দেখে নেবেন আপনারা। তো শ্রোতাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে, একটু সময় বের করে এই কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা আর্টিকেলটি অবশ্যই পড়বেন। লিঙ্ক শো নোটসে আছে। যারা গবেষণার জগতে একদম নতুন, কেবল নিজেদের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই পেপারটির মূল কথাটা খুব সহজে বলা যাক। একটু ভেবে দেখুন, সমাজ কিভাবে কোনো নতুন উদ্ভাবনকে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে চিরকালের জন্য জুড়ে দেয়। হ্যাঁ, মানে উদ্ভাবক নিজে সেই জিনিসটা তৈরি না করেও মানুষ কিভাবে তাকেই উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, বা বলা যায় ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দোষারোপ করে। গিলোটিনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে লেখকরা দেখিয়েছেন, উদ্ভাবন কেবল কোনো ল্যাবরেটরির কারিগরি বিষয় নয়, এটা আসলে সমাজ, মানুষের মূল্যায়ন আর তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা যৌথ সৃষ্টি। ঠিক। তো চলুন ফিলাডেলফিয়ার একাডেমিক জগৎ থেকে আমরা আবার ফিরে যাই অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই উত্তাল প্যারিসে। সেকালে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছিল। সমাজে তখন মৃত্যুদণ্ড ছিল ভীষণ বৈষম্যমূলক। ধরুন, অভিজাত বা রাজপরিবারের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তা কার্যকর করা হতো তলোয়ার দিয়ে, এক কোপে, মানে সম্মানজনকভাবে। আর সাধারণ মানুষ বা গরিবদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বা চাকায় পিষে, অত্যন্ত যন্ত্রণাদারকভাবে। কিন্তু
আমার একটা খটকা লাগে এখানে। ডক্টর গিলোটিন তো একজন সম্মানিত চিকিৎসক ছিলেন, মানুষের প্রাণ বাঁচানো যার পেশা, তিনি কেন হঠাৎ এই বিচার ব্যবস্থার মাঝে প্রবেশ করতে গেলেন? এই বিষয়টা বুঝতে হলে আমাদের সেকালের বৃহত্তর মানসিকতার দিকে তাকাতে হবে। তখন তো ইউরোপ জুড়ে এনলাইটেনমেন্ট বা জ্ঞানদীপ্তির যুগ চলছে, তাই না? হ্যাঁ, ভলতেয়ার, বেসারিয়ার মতো দার্শনিকরা রাষ্ট্রের অমানবিক শাস্তির তীব্র সমালোচনা করছেন তখন। এক্স্যাক্টলি। আর ডক্টর গিলোটিন আসলে কোনো জল্লাদ বা ঘাতক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ। তিনি ভেবেছিলেন মানবাধিকার আর সমতার কথা। আচ্ছা। তিনি ফরাসি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ১৭৮৯ সালে একটা যুগান্তকারী প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, অপরাধী যেই হোক না কেন, হোক সে অভিজাত বা সাধারণ কৃষক, মৃত্যুদণ্ড সবার জন্য সমান হতে হবে। মানে আইনের চোখে সবাই সমান। হ্যাঁ, আর সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে একটা সাধারণ যন্ত্রের মাধ্যমে, যা হবে দ্রুত, নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন। তিনি চেয়েছিলেন বিচার ব্যবস্থা থেকে অমানবিক নির্যাতন দূর করতে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটা তো একটা চরম মানবিক প্রস্তাব ছিল, কিন্তু এখানে এই গল্পটা একটা অদ্ভুত মোড় নেয়। আমি পেপারটা পড়ে রীতিমতো অবাক হয়েছি। কোন বিষয়টা? ওই ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকার ব্যাপারটা? হ্যাঁ, ডক্টর গিলোটিনের এই প্রস্তাবের পর তৎকালীন রাজতন্ত্রপন্থী পত্রিকা লেজ অ্যাক্টস দেজ অ্যাপোথ্রেস তাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে। তারা একটা ব্যঙ্গাত্মক গান ছাপে, আর সেখানেই প্রথমবারের মতো এই কাল্পনিক যন্ত্রের নাম দেওয়া হয় গিলোটিন। মানে যারা তাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত তারাই তাকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে দিল। অনেকটা আজকের দিনের ইন্টারনেট মিমের মতো, যা একবার ভাইরাল হলে আর মোছা যায় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, এই ব্যঙ্গাত্মক নামটা সমাজে এত গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো কিভাবে? ডক্টর গিলোটিন কি আদৌ কোনো নকশা জমা দিয়েছিলেন? না, তিনি কোনো নকশাই দেননি। এমনকি তিনি জানতেনও না যন্ত্রটা দেখতে কেমন হবে। এখানকার মেকানিজম বা প্রক্রিয়াটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে বলা যায় সোশ্যাল অ্যাট্রিবিউশন বা সামাজিক রোপণ। আচ্ছা, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন। ধরুন, তৎকালীন প্যারিসের সাধারণ মানুষ রাজনীতিক ব্যঙ্গ খুব পছন্দ করত। পানশালায়, রাস্তায় ওই গানটি মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ডক্টর গিলোটিন ছিলেন বিপ্লব, সমতা এবং বিজ্ঞান মনস্কতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। বুঝতে পারছি। তাই রাজতন্ত্রের সমর্থকরা যখন যন্ত্রটিকে তার নামের সাথে জুড়ে দিল, তখন তারা আসলে আলোকিত যুগের বিজ্ঞান ও সংস্কারকে উপহাস করেছিল। তারা বোঝাতে চেয়েছিল এই প্রগতিশীলদের বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত একটা রক্তপিপাসু যন্ত্রে এসে ঠেকেছে। আরে বাবা, তার মানে সরকার বা আইনসভা কখনোই এর নাম গিলোটিন রাখেনি? একদমই না। তারা বলতো লুইসন বা নিছকি মেশিন। কিন্তু সমাজ ওই নির্দিষ্ট মানুষটির পরিচিতি বা অ্যাডভোকাসিকে ওই ভৌত ধারণার সাথে চিরস্থায়ীভাবে জুড়ে দেয়। ব্যাপারটা অসাধারণ। তাহলে বাস্তবের মাটিতে গিলোটিন নামক যন্ত্রটি আসলে তৈরি করেছিল কারা? আর্টিকেলে তো 3 জন আলাদা ব্যক্তির কথা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। হ্যাঁ, যাদের ছাড়াই যন্ত্র তৈরি হতো না। প্রথমজন হলেন জল্লাদ চার্লস হেনরি স্যানসন। তিনি ব্যবহারিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ওই যে তিনি কমিটিকে জানান যে তলোয়ার দিয়ে বারবার শিরোচ্ছেদ করা অসম্ভব, মানুষের ঘাড়ে কোপ দিলে তলোয়ার ভোঁতা হয়ে যায়। ঠিক, ফলে পরের জনের ক্ষেত্রে সেটা অত্যন্ত অমানবিক রূপ নেয়। এরপর আসেন ডক্টর অ্যান্টোইন লুইস, যিনি ছিলেন একাডেমি অফ সার্জারির সেক্রেটারি। তিনি একটা নিখুঁত নকশা তৈরি করেন। হ্যাঁ, তিনি বোঝান যে ব্লেডটা সোজা না হয়ে যদি তির্যক বা কোনাকুনি হয়, তবে তা এক কোপে কাজ শেষ করবে। আর শেষমেশ টোবিয়াস শ্মিড নামের এক জার্মান পিয়ানো নির্মাতা অত্যন্ত কম খরচেই যন্ত্রটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ইতিহাস কেন ওই 3 জনের কাউকে মনে রাখল না? শ্মিড তো এটার জন্য পেটেন্টও দাবি করেছিলেন, তাই না? ঠিক, এখানেই গবেষণাপত্রটির সবচেয়ে শক্তিশালী তাত্ত্বিক দিকটি উন্মোচিত হয়, যাকে বলা হয়েছে ফিল্টারিং মেকানিজম বা ছাঁকন প্রক্রিয়া। সমাজ কিভাবে বেছে নেয় কাকে মনে রাখবে আর কাকে বিস্মৃতির অতলে ছুঁড়ে ফেলবে, এই ব্যাপারটা। একদম। এটা কেবল কে বানিয়েছে তার উপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে উদ্ভাবকের সামাজিক অবস্থান বা স্ট্যাটাসের উপর। শ্মিড যন্ত্রটি বানিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তৎকালীন ফরাসি সমাজে তিনি ছিলেন নিছকই একজন কাঠমিস্ত্রি। মানে তার কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সমাজ একজন সাধারণ কারিগরকে একটা যুগান্তকারী আইনি যন্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল না। ঠিক তাই। আর জল্লাদ স্যানসনের কথা বললে, সে যুগে জল্লাদদের সামাজিকভাবে অচ্ছুত মনে করা হতো। সমাজের মূল স্রোতে তাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কিন্তু ডক্টর লুইসের বিষয়টা তো এমন ছিল না। তিনি তো একাডেমি অফ সার্জারির সেক্রেটারি ছিলেন, প্রচুর সম্মান ছিল তার।
এমনকি শুরুর দিকে সরকার যন্ত্রটিকে লুইসেন বলেও ডাকতে শুরু করেছিল। হ্যাঁ, তাহলে তিনি কেন ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেলেন, এটাই তো প্রশ্ন। ঠিক, তিনি কি নিজে থেকে কোনো প্রতিবাদ করেননি? খুব চমৎকার একটা পয়েন্ট ধরেছেন। এখানে কাজ করেছে অন্য একটা মনস্তত্ত্ব। ডক্টর লুইস সচেতনভাবে এই যন্ত্রের সাথে নিজের নাম জুড়তে প্রবল বাধা দেন। কেন? তিনি কি ভয় পেয়েছিলেন? হ্যাঁ, তিনি যখন বুঝতে পারলেন যন্ত্রটি কতটা নিখুঁতভাবে মানুষ হত্যা করতে পারে, তিনি ভবিষ্যৎ পরিণতি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি জনসমক্ষে এর কোনো কৃতিত্ব নিতে অস্বীকার করেন। আচ্ছা। আর অদ্ভুতভাবে প্রথম গিলোটিন কার্যকর হওয়ার 1 মাসের মধ্যেই তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যান। ফলে মানুষের কাছে একমাত্র পরিচিত আর বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা নাম হিসাবে ডক্টর গিলোটিনই টিকে যান। মানে ডক্টর গিলোটিন না পারলেন এই নামকে মুছতে, না পেলেন কোনো আইনি সুরক্ষা? এই পুরো ব্যাপারটা আমাকে বারবার মেরি শেলির ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আরে হ্যাঁ, দারুণ একটা উপমা, তাই না? সেই গল্পে স্রষ্টা ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের নাম তার সৃষ্ট সেই নামহীন দানবের সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে যুগের পর যুগ ধরে সাধারণ মানুষ দানবটিকেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলে ডাকতে শুরু করে। একদম নিখুঁত উপমা এটা। পেপারে এই প্রক্রিয়াটিকে একটা তাত্ত্বিক রূপ দেওয়া হয়েছে, মূল্যায়ন আরোপণ চক্র বা দি ইভ্যালুয়েশন অ্যাট্রিবিউশন স্পাইরাল। এই চক্রটা আসলে কিভাবে কাজ করে, এর পেছনের মেকানিজমটা কি? এই মডেলটি মূলত দেখায় কিভাবে সমাজ একটা উদ্ভাবন আর তার তথাকথিত উদ্ভাবককে ধাপে ধাপে একসাথে সহ-নির্মাণ বা কো-কনস্ট্রাক্ট করে। এটা একটা চক্রাকার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। প্রথম ধাপটা কি? প্রথম ধাপে সমাজ একটা বড়সড় সমস্যার সমাধান খোঁজে, যেমনটি ছিল যন্ত্রণাহীন মৃত্যুদণ্ড। দ্বিতীয় ধাপে কেউ একজন সেই সমাধানের সপক্ষে জোরালো অ্যাডভোকেসি করেন। ডক্টর গিলোটিন ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। আচ্ছা, মানে সমাধানটা সামনে আনা। হ্যাঁ, আর তৃতীয় ধাপে সমাজ তখন ওই ব্যক্তির নিজস্ব ভাবমূর্তি, তার আদর্শ দিয়ে ওই উদ্ভাবনটিকে মূল্যায়ন করতে শুরু করে। আর মডেলটির সবচেয়ে মারাত্মক এবং শেষ ধাপটি হল ক্রিস্টালাইজেশন বা স্ফটিকীকরণ। স্ফটিকীকরণ বলতে এখানে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? কারণ ফরাসি বিপ্লব তো এক পর্যায়ে রেন অফ টেরার বা সন্ত্রাসের রাজত্বের রূপ নিয়েছিল, তখন তো গিলোটিনের অর্থই পুরোপুরি পাল্টে গেল। একদম ঠিক বলেছেন। স্ফটিকীকরণ মানে হলো এমন এক পর্যায় যখন নাম আর বস্তু সমাজের মনস্তত্ত্বে পাথরের মতো গেঁথে যায়। আচ্ছা। 1793-94 সালে যখন সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হলো, তখন গিলোটিন আর সমতার প্রতীক রইল না। এটি হয়ে উঠল রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন এবং গণমৃত্যুর এক ভয়ঙ্কর প্রতীক। হ্যাঁ, রাজা লুই থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, হাজার হাজার মানুষের মাথা কাটা পড়ল শহরের চৌরাস্তায়। কিন্তু ততদিনে গিলোটিন নামটা সমাজে এতটাই গভীরভাবে স্ফটিকীকৃত হয়ে গেছে যে সমাজ আর সেই নামটা বদলাতে চাইল না, বরং এই পর্যায়ে এসে ঘটল উল্টো ঘটনা। উল্টো ঘটনা মানে? যন্ত্রের এই নতুন ভয়ঙ্কর অর্থ উল্টা ডক্টর গিলোটিনের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে চিরতরে কলঙ্কিত করে দিল। যে মানুষটি আক্ষরিক অর্থে মানবাধিকারের জন্য লড়েছিলেন, ইতিহাস তাকে ডক্টর ডেথ বা মৃত্যুর ডাক্তার হিসেবে আখ্যায়িত করল। ভাবা যায়, এটা সত্যি মর্মান্তিক। একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য বিশাল একটা ট্র্যাজেডি। কিন্তু আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে যদি ভাবি, আজকের দিনের প্র্যাকটিশনার বা গবেষকরা এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে কি শিখতে পারেন? প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়টি হল ইনোভেশন বা উদ্ভাবন কোনো শূন্যস্থানে ঘটে না। এটা একটা আদ্যোপান্ত সামাজিক প্রক্রিয়া। একটা উদ্ভাবন সমাজে কিভাবে গৃহীত হবে, কার নামে পরিচিত হবে, তা কেবল এর কারিগরি শ্রেষ্ঠত্বের ওপর নির্ভর করে না। তাহলে আর কিসের উপর নির্ভর করে? নির্ভর করে উদ্ভাবক বা প্রবক্তার সামাজিক অবস্থানের ওপর, তার কাজের সাথে সমাজের মূল সমস্যাগুলোর সম্পৃক্ততার ওপর। আপনি যদি এমন কোনো প্রযুক্তির প্রবক্তা হন যা সমাজের আবেগে নাড়া দেয়, তবে সমাজ আপনাকে এর পুরো কৃতিত্ব দেবে, অথবা এর ভয়াবহতার জন্য পুরোপুরি আপনাকে দোষারোপ করবে। এমনকি আপনি যদি ল্যাবরেটরিতে বসে সেটির আসল স্রষ্টা নাও হন, তবুও সমাজ আপনাকেই তার মুখবন্ধ হিসেবে বেছে নেবে। আপনার এই কথাটা আমাকে ভবিষ্যতের একটা ভীষণ জরুরি চিন্তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কোন বিষয়টা? এই যে সমসাময়িক প্রযুক্তির কথা যদি ভাবি, যেমন ধরুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল কিংবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এগুলোর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি কিভাবে কাজ করবে? দারুণ একটা প্রশ্ন। ধরুন কোনো এআই চরম ভুল করে বসল,
কোনো চালকবিহীন গাড়ি মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ল, বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে এমন কিছু তৈরি হলো যা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করল, তখন সমাজ কাকে দায়ী করবে? হ্যাঁ, আর অন্যদিকে যদি যুগান্তকারী কোনো সাফল্য আসে, তখন কার মাথায় মুকুট পড়াবে? যিনি কোড লিখেছেন সেই অজ্ঞাত প্রোগ্রামার, নাকি ওই কোম্পানির সিইও? ঠিক, নাকি প্রযুক্তিটিকে নিজেই একটা সত্তা হিসেবে বিবেচনা করবে? যারা তরুণ গবেষক আছেন তাদের জন্য এটা কিন্তু আগামী 1 দশকের জন্য বিশাল একটা গবেষণার ক্ষেত্র হতে পারে। আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। প্রযুক্তির এই আধুনিক যুগে বড় বড় উদ্ভাবনের পেছনে কোনো একক ব্যক্তি থাকে না, থাকে এক বিশাল টিম। হ্যাঁ, অগণিত ডেটা সায়েন্টিস্ট আর ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক স্বভাবতই জটিল বিষয়কে সহজ করতে চায়। সমাজ একটা মুখ বা একটা নাম খুঁজতে চায়, যাকে সে ভালোবাসতে পারে অথবা ঘৃণা করতে পারে। এআই এর ক্ষেত্রে যখন কোনো অভাবনীয় সাফল্য বা ব্যর্থতা আসবে, তখন সম্ভবত সেই ব্যক্তিকেই বেছে নেবে যার সামাজিক অবস্থান সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। মানে যে ব্যক্তি ওই প্রযুক্তির সাথে জনসম্মুখে সবচেয়ে বেশি যুক্ত। ঠিক যেভাবে ডক্টর গিলোটিন তার আদর্শগত অবস্থানের কারণে ফেঁসে গিয়েছিলেন। সমাজ তো ভেতরের কোডিং বুঝবে না, সমাজ বুঝবে কে ওই প্রযুক্তির হয়ে সবচেয়ে বড় গলায় কথা বলেছিল। একদম ঠিক। আজকের এই দীর্ঘ আর রোমাঞ্চকর আলোচনা শেষে পৌঁছে আমি শ্রোতাদের ভাবনার জন্য একটা গভীর এবং কিছুটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন ছেড়ে দিতে চাই। বলুন। উদ্ভাবনের একটা অদ্ভুত প্যারাডক্স হলো, সমাজ যে প্রক্রিয়ায় একজন মানুষকে উদ্ভাবক হিসেবে নায়কের আসনে বসায়, ঠিক সেই একই প্রক্রিয়া তাকে এমন এক ভয়াবহ ইতিহাসের ফ্রেমে আজীবনের জন্য বন্দী করে ফেলতে পারে, যা সে তার সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেনি। একদম তাই। ডক্টর গিলোটিন মানবতা চেয়েছিলেন, বিচার ব্যবস্থায় সমতা চেয়েছিলেন, কিন্তু নির্মম ইতিহাস তাকে এক গণমৃত্যুর যন্ত্রের সমার্থক বানিয়ে দিয়েছে। তো একবার শান্ত হয়ে ভেবে দেখুন, আপনি আজ যে যুগান্তকারী প্রযুক্তির পক্ষে অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, ভবিষ্যৎ ইতিহাস তার কী অর্থ তৈরি করবে তাকে আপনি আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? নাকি আপনার নামটাও কোনো এক অজানা ভবিষ্যতের গিলোটিন হয়ে টিকে থাকবে? এই শান্ত অথচ গভীর প্রশ্নের সাথে চিন্তা করতে করতেই শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন। ভালো থাকবেন আর চারপাশের উদ্ভাবনগুলোকে নতুন চোখে দেখতে শিখবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। 1757 के फ्रांस में पेरिस के बीच चौराहे पर एक ऐसा खौफनाक दृश्य देखा गया जिसकी आज के समय में कल्पना करना भी मुश्किल है। रॉबर्ट फ्रांसवा डैमियंस नाम के एक व्यक्ति पर राजा की हत्या के प्रयास का आरोप था। बिल्कुल, और उसे सजा देने का जो तरीका था वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हाँ, मतलब उसे बीच चौराहे पे लाया गया और उसके शरीर के चारों अंगों को 4 अलग अलग घोड़ों से बांधकर विपरीत दिशाओं में खिंचवा दिया गया। उस दौर में देखा जाए तो न्याय का मतलब ही यही था, जितना अकल्पनीय दर्द दिया जा सके उतना बेहतर। ये बर्बरता उस समय की न्याय प्रणाली का मतलब एक बहुत ही सामान्य हिस्सा थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसी चरम क्रूरता के बीच, मतलब एकदम इसी खौफनाक माहौल में, एक ऐसा विचार पनपने लगा जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसे उपकरण का विचार जो दर्द ना दे, जो अपना काम बस पलक झपकते ही कर दे, और सबसे अहम बात, जो अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव ना करे। सही बात है। इसी विचार ने उस मशीन को जन्म दिया जिसे हम फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, यानी गिलोटीन। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा पेच यहीं आता है। जिस डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन के नाम पर इस पूरी मशीन का नाम रखा गया और जिन्हें दुनिया आज भी इसका आविष्कारक मानती है, असल में उन्होंने इसका आविष्कार कभी किया ही नहीं था। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, मतलब उन्होंने तो कभी इसका कोई खाका या ब्लूप्रिंट भी नहीं खींचा था। और यही भ्रम इस पूरी रिसर्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारी आज की ये जो चर्चा है वो अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में छपे एक बेहद प्रतिष्ठित और FT50 सूची में शामिल एक वास्तविक शोध पत्र पर आधारित है। पाओलो एवर्सा, पॉल गोवार्ड और मारिया ए मकारोवा द्वारा लिखे गए इस पेपर का शीर्षक है द सोशल एट्रीब्यूशन ऑफ इनोवेशन, अनकवरिंग द हेड्स बिहाइंड द गिलोटीन। इस दिलचस्प अध्ययन के गहराई में जाने से पहले
अपने उन वफादार सुनने वालों के साथ कुछ बहुत ही अहम बातें साझा करना जरूरी है जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि श्रोताओं को पता है, मार्च 2026 से हमने अपने इस कार्यक्रम को सप्ताह में 2 बार रिलीज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हर रविवार और सोमवार को। हाँ, रविवार को हम किसी क्लासिक पेपर या किताब पर बात करते हैं और सोमवार की चर्चा शीर्ष स्तर के पीयर रिव्यूड जर्नल्स के प्रकाशनों पर केंद्रित होती है। और हमने इसे सीमित रखने का एक बहुत ही सचेत निर्णय लिया है। और इसके पीछे की वजह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि एआई आधारित ऑडियो कार्यक्रम तैयार करने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, जो न केवल बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, बल्कि उन्हें ठंडा रखने के लिए बेहिसाब पानी भी इस्तेमाल होता है। तो प्रकृति और जलवायु पर पड़ने वाले इस भारी दबाव को कम करने के लिए हमने अपनी रिलीज को सप्ताह में केवल 2 बार तक सीमित रखा है। ये बहुत जरूरी है। ये हमारी चर्चाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना जलवायु परिवर्तन पहल में योगदान देने का एक प्रयास है। हम अपने सभी वफादार श्रोताओं के समर्थन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और एक और बहुत ही शानदार पहल की जानकारी मैं यहाँ देना चाहूँगी। अगर हमारे सुनने वालों में से कोई फिलाडेल्फिया, अमेरिका में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की 86वीं वार्षिक बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की योजना बना रहा है, तो उन्हें स्पेस इकोनॉमी पर होने वाली प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप के लिए पंजीकरण जरूर कराना चाहिए। अरे हाँ, वो वर्कशॉप। हाँ, इसका नेतृत्व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल के डॉक्टर मेहदी मुंतखा भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस कार्यक्रम के निर्माता मयूख मुखोपाध्याय भी स्पेस इकोनॉमी पर इस बहुविषयक और अत्यधिक उद्यमशील वर्कशॉप में अपना योगदान दे रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसका लिंक शो नोट्स में है ना? जी बिल्कुल, लिंक शो नोट्स में मौजूद है। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा है, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट सिम डिवीजन ने जून 2026 से शुरुआती करियर वाले शोधकर्ताओं और पीएचडी छात्रों के लिए AOM SIM-Bytes नाम से एक नई मासिक पहल शुरू की है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये मैनेजमेंट समुदाय के वरिष्ठ विद्वानों और फैकल्टी सदस्यों के रील शैली वाले छोटे वीडियो हैं। मैंने देखा कि इसका पहला यूट्यूब शॉट प्रोफेसर एड फ्रीमन का है, जिन्हें स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का जनक भी माना जाता है। वाह, ये तो बहुत ज्ञानवर्धक होगा। बिल्कुल, ये पहल सिम करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। ट्रेंड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शेल्डन सिमोला की सोच का ये परिणाम है और अब इसे कमेटी चेयर लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो की प्रोफेसर जेनिफर ग्रिफिन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमारे निर्माता मयूख, जो इस कमेटी के सदस्य भी हैं, पिछले 1 साल से इस पहल की सामग्री डिजाइन और संपादन की योजना में सक्रिय रूप से स्वयं सेवा कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है। AOM SIM-Bytes का लिंक भी शो नोट्स में दिया गया है। जी, और जो लोग अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च शुरू करने वाले हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वे समय निकालकर इस विचारोत्तेजक और कड़ाई से पीयर रिव्यूड लेख को जरूर पढ़ें। पेपर का लिंक भी शो नोट्स में है। अगर हम इस पेपर के मूल विचार को बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये इस बात की जांच करता है कि समाज आखिर ये कैसे तय करता है कि किसी नए आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाएगा। मतलब मशीन किसने बनाई सिर्फ ये मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पुर्जे किसने जोड़े, ये इस बारे में है कि समाज के अलग अलग गुट किस तरह एक व्यक्ति की पहचान को उस मशीन के असर और अर्थ के साथ हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 18वीं सदी के फ्रांस की उस सामाजिक उथल पुथल को समझे बिना हम इस श्रेय देने के खेल को नहीं समझ सकते। उस समय मृत्युदंड और उसकी क्रूरता पर एक बेहद तीखी बहस चल रही थी। एक तरफ ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट के विचारक थे और दूसरी तरफ रूढ़िवादी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हम किसी बहुत पुरानी और जटिल स्वास्थ्य या न्याय प्रणाली को सुधारने की कोशिश कर रहे हों, जहां हर किसी का अपना एक राजनीतिक एजेंडा होता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस बहस के 3 प्रमुख हिस्से थे। कौन कौन से? पहला सवाल था मृत्युदंड की आवश्यकता, यानी क्या राज्य को किसी की जान लेने का अधिकार है। सिसारे बिकारिया जैसे दार्शनिक इसे सिरे से नकार रहे थे। दूसरा आयाम था दंड की क्रूरता। वोल्टेयर जैसे विचारकों ने उस व्यवस्था की घोर निंदा की जहां लोगों की हड्डियां पहिए पर बांधकर तोड़ दी जाती थी। वो तो सच में बहुत अमानवीय था। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश तीसरे आयाम को लेकर था, सामाजिक वर्गों के बीच दंड की असमानता। यानी अमीरों के लिए आसान मौत और गरीबों के लिए यातना। एकदम सही। अगर कोई कुलीन व्यक्ति अपराध करता है तो उसे तलवार से एक झटके में आसान मौत दी जाती थी,
लेकिन अगर वही अपराध कोई गरीब करता है तो उसे घंटों तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। तो जोसेफ जी मिस्त्री जैसे रूढ़िवादियों का क्या तर्क था इसमें? राजशाही समर्थकों का स्पष्ट मानना था कि ये क्रूरता और असमानता कोई खामी नहीं है। उनके लिए समाज में पदानुक्रम बनाए रखने के लिए ये डर जरूरी था। या मैं श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हम इस पॉडकास्ट में बिना किसी पक्ष का समर्थन किए केवल मूल स्रोतों में निहित विचारों को सामने रख रहे हैं। शोधकर्ता बस इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि राजशाही समर्थकों और क्रांतिकारियों दोनों ने अपने अपने एजेंडे के लिए इस बहस का कैसे इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो इसी उबलते हुए राजनीतिक माहौल के बीच अक्टूबर 1789 में डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन की एंट्री होती है। वो एक बेहद सम्मानित चिकित्सक और राजनेता थे। उन्होंने नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा कि सभी को समान रूप से और बिना दर्द के मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, एक सरल तंत्र के माध्यम से। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तब वो मशीन दुनिया में मौजूद ही नहीं थी, है ना? उन्होंने तो बस एक विचार रखा था। तो लोगों ने डॉक्टर गिलोटिन को इसका आविष्कारक कैसे मान लिया? यही तो इस पेपर का मुख्य बिंदु है। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि लेस एक्टिस देयर्स आर पोर्ट्रेज नाम की एक पत्रिका ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक गाना तक लिख दिया था और उसी में पहली बार इसे गिलोटिन नाम दे दिया गया। लेकिन उन्होंने तो मिराबिल नाम भी सुझाया था, फिर गिलोटिन ही क्यों चिपका रहा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पेपर का एक मुख्य सिद्धांत समझ आता है जिसे वो प्रॉब्लम मैपिंग कहते हैं। प्रॉब्लम मैपिंग मतलब समस्या का मानचित्रण। हाँ, डॉक्टर गिलोटिन का चिकित्सा और राजनीति में जो रुतबा था, जो उनका स्टेटस था, और उन्होंने जिस तरह से इस काल्पनिक मशीन को समानता और मानवता के मूल्यों के साथ जोड़ा, उससे लोग तुरंत उस विचार से जुड़ गए। अच्छा, मतलब लोग तकनीकी बारीकियों से ज्यादा भावनाओं से जुड़ते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गिलोटिन की अपनी छवि और मशीन का वो मानवीय उद्देश्य दोनों एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल गए। लेकिन प्रस्ताव देने के लगभग 2 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। 1792 में जब वास्तव में पुरानी व्यवस्था चरमरा गई और मशीन बनाने की बात आई तो डॉक्टर गिलोटिन ने खुद को इससे दूर कर लिया था। हाँ, वो पीछे हट गए थे। तो फिर असली काम किया किसने? इसके पीछे 3 मुख्य लोग थे। पेरिस के जल्लाद चार्ल्स हेनरी सैनसन ने व्यवहारिक कारणों से इसकी वकालत की, क्योंकि तलवारें जल्दी भोथरी हो जाती थीं और काम मुश्किल हो रहा था। फिर डॉक्टर एंटोनी लुई ने इसका डिजाइन तैयार किया और टोबायस श्मिट नाम के एक पियानो निर्माता ने असल में इस मशीन को अपने हाथों से बनाया। क्या बात कर रही हैं? एक पियानो निर्माता ने गिलोटिन बनाई? जी हाँ। शुरुआत में इसे डॉक्टर लुई के नाम पर लुइसों या लुइसेट भी कहा गया था। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि स्मार्टफोन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी अज्ञात इंजीनियर ने बनाया हो, लेकिन सारा श्रेय किसी बड़े सीईओ को मिल जाए। लेकिन सैनसन या श्मिट को श्रेय क्यों नहीं मिला? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब समाज के फिल्टरिंग के तरीके में छिपा है। फिल्टरिंग? किस तरह का फिल्टर? स्टेटस या रुतबे का फिल्टर। देखिए, जल्लाद सैनसन को समाज में एक कलंकित दर्जे से देखा जाता था। उसका काम ही ऐसा था। हाँ, उस समय जल्लादों को समाज से अलग रखा जाता था। बिल्कुल। और उसने जो तर्क दिए थे वो केवल आर्थिक और व्यवहारिक थे, न कि कोई महान वैचारिक या नैतिक तर्क। और टोबियास श्मिट तो बस एक साधारण कारीगर था। तो समाज किसी ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े वैचारिक बदलाव का जनक नहीं मानना चाहता था जिसका कोई सामाजिक रुतबा ना हो। एकदम सही। समाज एक कलंकित व्यक्ति या साधारण कारीगर को समानता के प्रतीक का जनक कैसे मान सकता था? और डॉक्टर लुई का क्या हुआ? उनका रुतबा तो था। उनका रुतबा था, लेकिन मशीन के पहले कुछ इस्तेमाल के बाद ही उनका निधन हो गया। वो इस मशीन के साथ अपनी पहचान को स्थापित नहीं कर पाए और डॉक्टर गिलोटिन पहले ही लोगों के दिमाग में ये बैठा चुके थे कि ये मशीन उनका मानवीय विचार है। तो मतलब घूम फिरकर वो अनाथ मशीन वापस डॉक्टर गिलोटिन के नाम से जुड़ गई। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कैसे करती है? इस पेपर में एक शब्द है इवैल्यूएशन एट्रीब्यूशन स्पाइरल। इसका क्या मतलब है? इसे मूल्यांकन श्रेय चक्र कह सकते हैं। बिना किसी तकनीकी भारीपन के इसे ऐसे समझिए, जब जनता किसी उपकरण में बहुत बड़ा बदलाव देखती है तो उसका दिमाग उसे किसी पहचाने हुए चेहरे से जोड़ता है। इसे एट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे एप्पल को स्टीव जॉब से जोड़ना। बिल्कुल। और जैसे जैसे वो चेहरा उस मशीन का पर्याय बन जाता है, मशीन का जो सामाजिक प्रभाव होता है वो उस व्यक्ति की छवि को भी बदल देता है। ये स्पाइरल या चक्र दोनों तरफ काम करता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है?
गिलोटीन के मामले में ये चक्र कैसे घुमा? देखिए, गिलोटीन को मानवता और समानता के प्रतीक के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन 1793, 1794 के बीच क्या हुआ? आतंक का शासन या रेन ऑफ टेरर? हाँ, उस दौरान ये मशीन सामूहिक हत्याओं का खौफनाक प्रतीक बन गई। हजारों लोगों के सिर काट दिए गए। तो तार्किक रूप से लोगों को ये सोचना चाहिए था कि डॉक्टर गिलोटीन का इस मारकाट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि ऐसा नहीं हुआ। जब मशीन का अर्थ मानवता से बदलकर क्रूरता हो गया, तब भी लोगों ने डॉक्टर गिलोटीन का नाम उससे अलग नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। बल्कि डॉक्टर गिलोटीन की अपनी छवि ही बदल गई। जो इंसान एक दयालु डॉक्टर था, वो इतिहास में एक क्रूर डॉक्टर डेथ के रूप में दर्ज हो गया। बाप रे, मतलब एक बार जब समाज किसी आविष्कार को किसी व्यक्ति के साथ क्रिस्टलाइज कर देता है, तो वो बंधन आसानी से नहीं टूटता। मशीन के मायने बदल गए, लेकिन सारा श्रेय या कहिए सारा दोष उसी व्यक्ति के सिर मढ़ा गया। हाँ, और यही इस रिसर्च का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, तो इस शोध से अकादमिक शोधकर्ताओं और व्यावसायिक दुनिया के लिए क्या मुख्य सबक मिलते हैं? अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि इनोवेशन या आविष्कार सिर्फ एक भौतिक चीज बनाने के बारे में नहीं है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी जनता तय करती है? बिल्कुल। दर्शक ये तय करते हैं कि वो इनोवेशन क्या है और उसका जनक कौन है। और व्यावसायिक दुनिया के लिए सबक ये है कि जब हम आज के तकनीकी युग में किसी लीडर या सीईओ को किसी नई तकनीक का श्रेय देते हैं, तो वो केवल मार्केटिंग नहीं है। तो क्या है वो? वो उस तकनीक को समाज में एक अर्थ देने का तरीका है। हम उस जटिल तकनीक को उस चेहरे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है और मुझे लगता है कि इस शोध से समकालीन विषयों के लिए भी कई रोचक सवाल उठते हैं। आज जब हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जटिल तकनीकों को देखते हैं, जिन्हें हजारों गुमनाम लोगों ने मिलकर बनाया है, तो भविष्य में समाज इनका श्रेय किसे देगा? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या ये श्रेय उन इंजीनियरों को मिलेगा जिन्होंने असल में कोड लिखा, या उन्हें जिन्होंने इसके बारे में सबसे अच्छी कहानी बुनी और समाज को एक अर्थ दिया? इतिहास को देखते हुए तो यही लगता है कि कहानी बुनने वाले ही हमेशा याद रखे जाते हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, आज हमारे आसपास ऐसे कितने आविष्कार हैं जो गलत नाम ढो रहे हैं? सोचने वाली बात है। और सबसे जरूरी सवाल, अगर कल को वो तकनीक समाज के लिए विनाशकारी साबित हो जाए, तो इतिहास की किताबों में खलनायक कौन कहलाएगा? वो जिसने उसे वास्तव में बनाया, या वो जिसकी छवि समाज ने उस तकनीक से हमेशा के लिए चिपका दी है? Den 28. marts 1757 i hjertet af Paris, der samlede en enorm menneskemængde sig på Place de Grève. Altså, de var der for at overvære henrettelsen af Robert François Damiens. Han var en mand, der i total desperation havde forsøgt at stikke kong Louis den 15. ned med en lille bitte kniv. Ja, en virkelig lille kniv, faktisk. Nemlig. Men det, som befolkningen blev viden til den dag, det var ikke en hurtig afslutning. Damiens blev udsat for en fuldstændig ubegribelig og udpenslet brutalitet. Han blev tortureret systematisk foran tusindvis af øjne. Hans krop de forsøgte at flå ham i stykker med 4 trækheste, og mens han simpelthen stadig trak vejret og var ved fuld bevidsthed, så blev han brændt levende. Det er jo næsten ikke til at bære at tænke på. Nej, det er frygteligt. Og bagefter, der blev hans aske spredt for alle vinde, hans hjem blev jævnet med jorden, og hele familien blev bare tvunget i eksil. Forestil dig lige at stå der på pladsen, midt i larmen, og bevidne det. For selvom datidens Europa jo var vant til vold, så rystede den her grusomme begivenhed simpelthen samfundets samvittighed helt vildt dybt. Den blev startskuddet til en årtier lang ophedet debat fra Paris til Wien om humanisme, grusomhed og den her groteske ulighed i straffesystemet. Det var et fuldstændig skelsættende øjeblik i europæisk historie. Men det bærer jo altså også på et gigantisk mørkt paradoks. For denne her intense søgen efter barmhjertighed, altså efter en mere human og ligeværdig måde at håndhæve loven på, den førte jo samfundet direkte frem til opfindelsen af den moderne tids første statslige maskine til massehenrettelser. Guillotinen. Lige præcis, guillotinen. En maskine, der endte med at drukne den franske revolution i blodet.
Og det er jo, altså det her er mysteriet for alvor begynder. For når man dykker ned i de her historiske kilder, så står der bare lysende klart, at manden, som maskinen er opkaldt efter, Dr. Joseph Ignace Guillotine, han opfandt den slet ikke. Nej, han rørte stort set ikke en finger rent teknisk. Præcis. Han designede ikke en eneste af dens dele, og han var aldrig nogensinde i nærheden af bygden, men alligevel klistrede hans navn sig uigenkaldeligt til det her frygtindgydende instrument. Det lugter faktisk lidt af det fænomen, man tit ser i store organisationer i dag. Altså at en person med den rette titel præsenterer en stor vision, og så pludselig, bum, så får de æren for alt det hårde arbejde, som alle de andre har udført nede i kulissen. Det er en utrolig skarp parallel til, hvad vores kildemateriale i dag faktisk undersøger. Vi tager nemlig afsæt i en utrolig grundig peer-reviewed artikel, publiceret i det helt vildt prestigefyldte Academy of Management Journal, som jo, for dem der kender til det, er et FT50-listet tidsskrift. Jamen, det er absolut toppen af poppen inden for forskning. Det er det. Og forskerne bag den her artikel, det er Paolo Aversa fra King's College London, Paul Gouvard fra Essex Business School og Maria A. Makarova fra Universiteta Cattolica. De bruger guillotinen og dens historie til at undersøge en meget dybere liggende mekanisme. De kigger simpelthen på, hvordan vi som samfund i det hele taget overhovedet beslutter, hvem vi tilskriver titlen som innovator. Og deres forskning viser ret tydeligt, at det sjældent handler om teknisk snilde eller den faktiske opfindelse. Det er i langt højere grad en social konstruktion. Men inden vi pakker den sociale konstruktion helt ud, så vil jeg bare lige tage et øjeblik til at henvende mig direkte til dig, der lytter med lige nu. Vi er utroligt taknemmelige for dig og alle vores loyale abonnenter. Siden marts 2026 er vi jo udkommet ugentligt med klassiske artikler om søndagen og helt ny forskning fra top-tier tidsskrifter om mandagen, ligesom i dag. Nemlig. Og grunden til, at vi har valgt at begrænse os til de 2 udgivelser om ugen, det er faktisk noget, vi går meget op i. Produktionen her er jo AI-assisteret, og de enorme datacentre, der trækker værket i baggrunden, de har altså et ret massivt klimaaftryk. Især når det gælder vandforbrug. Så at begrænse vores udgivelser er simpelthen vores måde at give tilbage til klimainitiativer på, uden at vi på noget tidspunkt mister den der rige dybde i vores diskussioner. Helt sikkert. Og apropos netværk og at mødes i den virkelige verden. Hvis du planlægger at deltage personligt ved Academy of Managements 86. Annual Meeting i Philadelphia i USA, så skal du altså huske at registrere dig til deres Professional Development Workshop, eller PDV, om Space Economy. Og ja, den er virkelig spændende. Den ledes af Dr. Mehdi Montakabi fra Yale Business School ved Oxford University. Ja, og grunden til, at vi nævner det, er, at vores faste producent, Mayukh Mukhopadhyay, faktisk er bidragører til den her meget tværfaglige og entrepreneurielle workshop. Linket til det ligger i vores show notes. Og vi har lige en lille ting mere, vi skal slå et slag for. Academy of Managements SIM-division har her i juni 2026 i al stilhed startet et nyt månedligt initiativ kaldet AOM SIM-Bytes. Ja, det er de her korte, reel-lignende videoer fra seniorforskere, målrettet PhD-studerende og folk tidligt i deres forskerkarriere, ikke? Præcis. Den allerførste video er med professor Ed Freeman, som mange kender som faderen til stakeholderkapitalisme. Initiativet er udtænkt af professor Sheldine Simola fra Trent University og køres nu videre af komitéformand professor Jennifer Griffin fra Loyola University. Og igen, vores producer har faktisk arbejdet frivilligt i et helt år som medlem af SIM Curriculum Development Committee med at designe og klippe indholdet til de her videoer. Det er et fantastisk arbejde. Linket til SIM-Bytes ligger selvfølgelig også i show notes. Vi vil virkelig indtrænge opfordre dig til at tage dig tid til at læse dagens vidunderlige artikel. Linket er også dernede. For hvis vi lige skal opsummere artiklen i et helt simpelt sprog for dig, der måske er helt ny inden for akademisk forskning, så handler den fundamentalt om det her. Hvordan finder vi ud af, hvem opfinderen er? Det viser sig nemlig, at det ikke er den, der står med skruetrækkeren. Det er den person, hvis idéer offentligheden kan knytte til samfundets største drømme og værdier. Lige netop. Så lad os skrue tiden tilbage igen. Til oktober 1789. Revolutionen i Frankrig buldrer bare derudad. Dr. Guillotine stiller sig op foran den her nyetablerede franske nationalforsamling. På det her tidspunkt var straffesystemet altså ekstremt klasseopdelt. Aristokrater de fik en såkaldt ærbørdig og hurtig straf ved at få hugget hovedet af med et skarpt sværd. Almindelige mennesker derimod, de led ufærdeligt ved at blive hængt eller endnu værre radbrækket. Ja, det var ren tortur. Det var det.
Så Dr. Guillotine foreslår en lovreform. Han vil have, at dødsstraf skal være fuldstændig klinisk, blottet for unødig lidelse, og vigtigst af alt, den skal være ens for alle, uanset om du er greve nede på slottet eller skomager på hjørnet. Han foreslår simpelthen et mekanisk fald, en simpel mekanisme, der ordner sagerne lynhurtigt. Men altså, det faldt jo ikke lige frem i god jord hos forsamlingen i første omgang, vel? Nej, overhovedet ikke. De ender faktisk med at grine af ham på talestolen. Men her peger forfatterne bag artiklen på, at vi allerede ser de 2 første og mest afgørende trin i deres procesmodel for innovation. De kalder det filtrering og kortlægning. Okay, filtrering og kortlægning. Ja, prøv at tænke på samfundet som en gigantisk si. Hver eneste dag bliver vi præsenteret for tusindvis af nye idéer. For at din idé overhovedet kan passere igennem sien og blive taget alvorligt, så kigger samfundet på din status som afsender. Og her havde Dr. Guillotine altså en enorm respekt. Han var en virkelig anerkendt læge. Han havde siddet i højt profilerede videnskabelige kommissioner, faktisk sammen med Benjamin Franklin på et tidspunkt. Og så var han bare utrolig kendt som en stædig forkæmper for folkesundhed. Okay, lad os lige pakke det her ud, for det er en ret vild tanke. Det er jo lidt ligesom en ekstremt karismatisk tech-direktør i dag, ikke, som stiller sig op på en stor scene med røgmaskiner og siger, at vi skal have en enhed, der forbinder hele verdens befolkning, uden nogensinde selv at have skrevet en eneste linje kode i sit liv. Publikum husker direktøren, fordi ideen taler direkte til vores største samfundsmæssige drømme. Alt imens de tusindvis af ingeniører nede i kælderen fuldstændig glemmes. Det er en perfekt analogi, for det er her den næste fase, altså kortlægningen, kommer ind i billedet. Han kortlagde eller mappede sin idé direkte mod de mest brændende værdier i oplysningstiden, nemlig lighed, altså egalitet og humanisme i straffesystemet. Det er super vigtigt at forstå her, at maskiner til halsåbning havde jo eksisteret i århundreder. Ja, der var vel den der Halifax-gibbet oppe i England. Lige præcis. Halifax-gibbets er et fremragende eksempel. Så innovationen lå slet ikke i selve træet og klingen. Den lå i selve ideen om maskinen som et storslået værktøj for social forandring. Og her er det, at det bare bliver helt vildt interessant for mig. For hvis Dr. Guillotine ikke opfandt den rent fysisk, hvem i al verden gjorde så? Hvorfor fik Tobias Schmidt, manden der rent faktisk stod med svede på panden og byggede prototypen, og endda bad om patentet, hvorfor fik han ikke æren? Eller Samson, bødlen, som udførte det hele i praksis? Det virker da på overfladen dybt uretfærdigt. Det kan man bestemt sige, det gør. Men artiklen forklarer årsagerne knivskarpt gennem modellens linse. Hvis vi tager Charles Henry Samson, bødlen først. Han skrev faktisk et ekstremt detaljeret memorandum i 1792, hvor han argumenterede for maskinen. Altså hvorfor de skulle bruge den? Ja, og han gjorde det ud fra et rent effektivitets- og økonomiperspektiv. Han forklarede, at sværd bliver utrolig hurtigt sløve, når de skal hugge gennem knogler. De var dyre af vedligeholden, og bødlerne blev simpelthen fysisk udmattet, når der var mange henrettelser. Hvilket jo er et meget validt praktisk problem. Fuldstændig. Men problemet var bare, at bødler var ekstremt stigmatiseret og socialt udstødte på det her tidspunkt. De boede isoleret, folk ville ikke røre ved dem, så fordi hans status var så utrolig lav, han var forbundet med død og urenhed, så filtrerede samfundet ham simpelthen bare fra. De kunne umuligt koble oplysningstidens lyse humanisme sammen med en bødel. Nå okay, det giver mening ud fra et klassesynspunkt. Hvad så med Tobias Schmidt? Han var jo bare håndværker, en klaverbygger. Han havde vel ikke blod på hænderne? Nej, han var kun en tysk håndværker, og som du nævnte, han forsøgte faktisk at søge patent, men regeringen afviste det pure med den begrundelse, at man ikke kan tage patent på et instrument til statslige henrettelser. I samfundets øjne leverede han bare manuelt arbejde til en andens vision. Han havde slet ikke den politiske status, der skulle til. Hold da op. Så er der den tredje mand, som man nogle gange hører om, Dr. Antoine Louis. Altså, var det ikke ham, der faktisk tegnede det famøse skråblad, så det virkede ordentligt? Jo, lige netop. Dr. Anton Louis designede den rent faktisk i sin endelige funktionelle form, og en kort overgang blev maskinen faktisk kaldt Louison efter ham. Ah, okay. Men hvorfor forsvandt det navn så igen? Det gjorde det af den tragiske årsag, at han døde kort tid efter, at maskinen blev taget i brug. Og fordi han forsvandt fra den offentlige scene, manglede han simpelthen den langvarige ideologiske tilknytning og det personlige forsvar, som Guillotines navn allerede havde etableret i offentligheden. Hans navn forsvandt bare langsomt fra den kollektive hukommelse.
Så hvad betyder alt det her egentlig for selve processen med at få et navn til at hænge ved? Hvordan ender vi fra de her 3 glemte mænd, og så til at guillotinens navn klæber sig til den for evigt? Her introducerer forfatterne en utrolig fascinerende mekanisme, som de kalder evaluerings- og tilskrivningsspiralen. Det lyder næsten som noget fra moderne medieteori. Det er det faktisk også i sin kerne. For at forstå det, skal vi lige markere noget meget vigtigt for vores lyttere. Når vi nu begynder at diskutere de venstreorienterede revolutionære og de højreorienterede royalister i 1700-tallets Frankrig, så tager vi absolut ingen sider her i udsendelsen. Vi rapporterer udelukkende upartisk på de historiske kilder i artiklen for at vise, hvordan de 2 politiske fløje brugte medierne til at manipulere sandheden. Naturligvis, vi kigger udelukkende på mekanismerne bag. Så hvordan ender det i en spiral? Og jeg læste noget om et satirisk angreb. Ja, altså den royalistiske publikation, der hed Les Actes des Apostres, de havde simpelthen alt, hvad revolutionen og Dr. Guillotine stod for. De så hans idé om lighed i døden som samfundsomstyrtende. Så for at håne ham, skrev de en meget berømt satirisk sang, hvor de gjorde nar af hans fine lægelige maskine, og ironisk kaldte den for en guillotine. De brugte simpelthen hans navn som et skældsord. Lige præcis. Men samtidig på den anden side, så elskede de revolutionære ham for hans oplysningstanker, og de koblede ham direkte til maskinens hurtige retfærdighed. Så begge sider af det politiske spektrum brugte hans navn konstant, enten som en syndebuk for alt ondt, eller som en stor helt for lighed. Denne her dobbeltsidede besættelse i aviser og sange skabte en fuldstændig vild og selvforstærkende spiral i pressen. Det er jo fuldstændig som de polariserede ekokamre på Twitter eller X i dag, ikke? Den ene fløj bruger et begreb til at håne, den anden tager det til sig som et æresmærke, og pludselig er det det eneste ord, hele befolkningen taler om. Maskinen blev vurderet gennem guillotins idéer, og guillotin blev vurderet gennem maskinen, indtil navnet bare sad, ja, uigenkaldeligt fast. Nemlig. Han kunne slet ikke undskifte sit eget navn. Og det bringer os til den næste fase, som artiklen kalder for krystallisering og den mørke transformation. For vi må ikke glemme, hvad der skete i årene 1793 og 1794. Rædselsregimet. Ja, The Reign of Terror. Her går maskinen fra at være det her flotte symbol på klinisk humanisme og samfundsmæssig lighed, til pludselig at være det første statslige massehenrettelsesværktøj i den moderne historie. Tusindvis af mennesker blev halshugget på stribebånd. Tårnet i Paris flød bogstaveligt talt med blod. Det her er den sande tragedie, for manden virkelig rammer, ikke? Altså forestil dig, at du pitcher ideen om internettet for at dele akademisk forskning frit og smuk male, og 10 år senere associerer alle i hele verden dit personlige navn udelukkende med dark web, børneporno og cyberkriminalitet. Det er jo det, der sker for ham. Men når nu maskinens rygte bliver så, undskyld udtrykket, bloddrøbende, hvorfor forsvinder hans navn så ikke bare fra den igen? Det er der krystalliseringen kommer ind. Forskerne forklarer, at når først forbindelsen mellem en innovator og selve innovationen er låst fast i den kollektive bevidsthed, når den altså er krystalliseret gennem den der enorme mediespiral, så ændres forbindelsen bare ikke igen. Også selvom selve innovationens betydning ude i den virkelige verden ændrer sig fundamentalt. Hold da op. Så navnet bliver hængende uanset hvad? Ja. Og i stedet for at navnet slipper maskinen, så sker der noget endnu mere fascinerende. Den nye, meget mørke betydning af guillotinen flyder baglæns i tiden og begynder at forurene opfinderens eget image. Den velmenende humanistiske læge, Dr. Guillotine, blev historiebøgerne transformeret til et monster. Han blev mytologiseret som en mørk, blodtørstig figur. En Dr. Death, om man vil. Det er utroligt. Så innovationsprocessen er altså en vaskeægte tovejsgade. Innovatoren skaber innovationen og giver et mening, men innovationen vender tilbage og genskaber i den grad også innovatoren. Det er præcis humlen i det hele. Som forsker er det en utrolig øjenåbner, fordi det viser os, at innovation ikke bare er et koldt, objektivt spørgsmål om at allokere kredit til den person, der tegnede de rigtige streger. Det er en stærk social konstruktion, som i høj grad er drevet af famfuldsdebatter, status og mediernes magt.
Og for praktikere, der lytter med her, altså ledere og udviklere ude i virksomhederne, der er lektien vel simpelthen, at den måde, du positionerer din idé på over for din organisation i forhold til deres værdier, ofte er langt, langt stærkere end de rent tekniske detaljer. Dit narrativ kan forme historien, men omvendt, når først ideen er ude, så kan du også lynhurtigt miste kontrollen over det narrativ, hvis produktets mening pludselig ændrer sig i offentligheden. Helt bestemt. Det er både en meget opløftende og en lidt skræmmende pointe at tage med sig. Det er det virkelig, og det fører mig faktisk frem til en ret provokerende tanke, som du lige kan sidde og tykke lidt på her til sidst. Tænk over det her fantastiske studie, når du kigger på vores egen samtid. Vi står lige nu midt i en kæmpe revolution med kunstig intelligens. Algoritmerne forandrer alt. Ja, det går ufatteligt stærkt lige nu. Nemlig. Og hvis, eller nok snarere når, AI for alvor ændrer vores samfund radikalt på måder, vi ikke engang forstår endnu, hvem vil vi så klistre navnet til, når vi i fremtiden skal fordele enten den store ære eller den knusende skyld? Bliver det mon den tavse programmør bag tasterne? Bliver det tech-milliardæren med den store megafon og statusen? Eller bliver det måske en helt tredje filosof, der talte højst på det rigtige tidspunkt? Hvem bliver mon fremtidens Dr. Guillotine? Det er et fremragende og faktisk lidt uhyggeligt spørgsmål at slutte af på. Ja, det synes jeg også. Vi vil gerne opfordre dig meget blidt til at kigge på selve artiklen og de links, vi har lagt i show notes. Vi takker dig af hele vores hjerte for din tid, din nysgerrighed og for dit nærvær her i vores undersøgelse af kilderne i dag. Vi håber meget på at have dig i ørerne igen ved vores næste udgivelse. Pas rigtig godt på dig selv derude.